Hi all, welcome again. Okay, in the last session we have discussed about the different type of documentation right within the testing phase. I'll quickly recap over here. Okay, for the software development we are following SDLC, right? That is the software development life cycle, and it is having around 6 phases, right? Okay, and within these phases we have one testing phase within which as a tester we are working, right? As a tester we are working over here. Okay, and during this testing phase we are following STLC, so software testing life cycle, right? That one we are following, and here is our main role. यहाँ पे हमारा main काम है, right? During STLC, that is the software testing life cycle. और इसके भी हमने different different phases देखे. Out of that, जो important phase है from our side, like from the tester side, that is the test case design phase, right? Test case design. Okay, understanding requirement. I'll write understanding the requirement, जो भी requirement है, right? Understanding the requirement. Okay, and understanding requirement, and then second will come based on the requirement, based on the project documentation, based on the test plan. Okay, based on all type of documentation we'll try to understand the project, and based on that next we'll go ahead and we'll create a test case. Like we'll be moving ahead from the tester side as a test case design documentation, right? Test case design documentation. Okay. So as a part of this design phase, we'll be focusing firstly on the requirement analysis, requirement study, right? We'll be focusing on the requirement side. Once we done with the requirement, then we'll be deriving test scenario. We'll be deriving test scenario, which areas to be tested, right? The requirement describes the application functionality, how should it work, right? It describes the functionality or business requirement. Based on the technical documentations are there, as well as design documentations are there, right? Likewise, we also have project documentation, like test plan project documentation, which includes what to be tested, what not to be tested, who will be responsible for which task. Like likewise, it will have list of documents. Out of that will be analyzing the, from the tester side will be analyzing the requirement. Based on that we'll be deriving the test scenarios, right? Okay, once we derive the test scenario, based on that we'll be writing the test cases, right? उसी के basis पे हम test cases write करते हैं. Okay, so like once we analyze the requirement, then we have written the test scenario, then we have written the test cases, right? In order to ensure, like whatever requirement we have received from the customer side, right? Whatever the number of requirements we have received, we need to map that requirement. Okay, and for that purpose we are creating RTM document, right? RTM document is nothing but requirement traceability matrix, which shows mapping in between your requirement, test scenario, and test cases. Like for example, there are 100 requirements. Okay, let's assume there are 100 requirement. For each requirement, how many test scenarios we have derived? Okay, and surrounding to that each test scenario, how many number of test cases we have derived, that we are mapping into the RTM document, right? Let me show the template for that as well. Okay, let me go to the folder. Okay, so guys, here you'll see based on the requirement documentation, right, will be or based on the application. If the application is already ready, based on application also we can explore the functionality, right? And from some project level documentation, from business level documentation, we can have the test scenario. Like I'll open the template for test scenario document. Okay, so here we'll see like basic details I have mentioned, like project name, client. Okay, and then reference document, like EFRS, DRS, design document, right? So which document we are referring, that we can put up here. Like who will be creating, like I'm working upon this requirement, I'll be putting my name and date of creation, then date of approval. Once we done with the all kind of scenarios, we'll be sending document for the approval to the team, right? Once we got the approval, we can have date over here. Likewise, these are the basic info related to project. This one is the main your RTM documentation, right? Which
includes your test scenario, which we have derived already, right? Sorry, this one is the test scenario document, right? And yeah, from that document we can have test scenario, which is the reference document. What is the test scenario description, what is its priority also, and how many number of test cases we have designed, right? So yeah, this one is the basic template for your test scenario document. So from the requirement we can pull out the test scenario, we can populate them here, we can have a reference document name here, then we can have description, right? And likewise priority and how many number of test cases we can derive for the same. Okay, I'll just quickly go through all the documentation templates so that you'll have clarity on that front. Okay, so this one is the test scenario document, fine. Okay, so second one is the based on that test scenario we'll be moving ahead and we'll be deriving some test cases, right? So the test scenario is to check the register functionality. So for a specific register functionality, we can have number of test cases from positive side, from negative flow side, right? Likewise, we can have number of test cases. So see, in the first test case, like we'll be validating the register account by providing only mandatory detail, right? For any registration form, there are a few fields which are mandatory and another which are not mandatory, right? So likewise, in the first scenario, in the first test case I will be taking up only mandatory field, and when it comes to the second test case, here also we are validating the functionality, register functionality, but by providing all the fields, right? Let's take an example of for example, if we want to create the account for Gmail, then it will be asking for the first name, last name, right? Sir, Uh, hello. yeah, Sir, sorry for interrupting. yeah. Okay, fine. So basically, as we discussed, like we have different documentation for our testing phase, right? So based on the requirement, like firstly, we'll be moving ahead with the uh, test scenario derive, right? Test scenario preparation. Okay. So within the test scenario, like we'll be having a template, and from that template, we can have a list of test scenarios, right? So from the requirement, like these are the basic details related to project. We can keep the project name. If we are working upon some client project, we can have that one. The reference document created by like our name. Okay, date of creation and date of approval. Once we're done with the documentation, then also we need to review from the team, right? And we need to take the approval. So that sort of information we can put up here on the top. Okay, once we're done with this basic project level information, then we can move ahead with the actual test scenario document creation. Okay, so for this documentation, like we'll be having a test scenario id. Okay, we will be needing one id, a unique number, so that we can trace it later on as well. A reference document, which reference document we are referring for the creation of this particular test case. Then what is its description? Here validate the working of register account functionality. So from name itself, it's very clear like what we are going to do, right? So that is the description about test case. Like we are going to validate the register account functionality. Then we can have a priority like register account login functionality. These are the main functionality, right? So we can keep them on a high priority. That firstly we need to check. And surrounding to this registered functionality, how many number of test cases we can derive, that we can put up here, and later on also as per our need we can update here. Okay, just for now focus on the fields like test scenario, reference document, test scenario description, priority, and number of test cases. As per our knowledge, as per our number of test case IDs, right? We can update that number here. Okay, so yeah, this is the first one. Require like first one test scenario we have derived. Okay, so for this specific register account test scenario, we can move ahead and we can create the test case, for example. Okay, okay. So yeah, so for that particular scenario, like we can have multiple test cases from the positive side, from the negative side. Likewise, we can have multiple test cases across each scenario. So let's focus here. So like for test case template document, here firstly we'll be having a unique ID so that we can trace that particular test case.
again, for which a test scenario will be deriving the test case that we are putting up here, test case test scenario id. Now here we'll be putting a test case title like validating registered account by providing only mandatory field, right? Test scenario is to validate the registered account functionality, and across that test scenario will have multiple test cases, right? So out of that, first one is to validate the registered account functionality only by providing mandatory detail, compulsory details, right? The field which needs to be in, like compulsory enter. And for a specific test case, we have a prerequisite like we need a link, right? We need a URL for particular application. Then these are the steps like which we need to write up in order to complete particular test case, in order to run particular test case, right? For that we need to write these test steps. So what are the test steps? See guys, click on my account. Likewise, I have written few of the sample test cases, right? Steps, we'll see that in detail during the execution. Okay, so test data, for example, for now we are going to register a specific account, right? For we are going to validate the register account. For that purpose we need multiple details based on the application type, like we need a username, we need a uh, we need a password. Okay, we need a password, we need a confirm password, right? Likewise, different fields we need. Okay, we can update here as per the need. Okay, for now I have put it some basic details. Okay, based on this, we'll be keeping here expected results. Like once we provide all the mandatory details, user should able to log in and he should able to see the account success page. Okay, this one is my first expectation, and another one is to user should able to take to account page with the confirmation image email should send to the registered email id. Likewise, we can have a single expectation, we can have number of expectation depending upon the particular test case. Okay, yeah, this is from the test case documentation side, right? This one is the test case template. It will have expected, actual result, priority, then result if we need to like pass, fail, and if we need to add any comment, we can add up here. Okay. Likewise, the another test case is validate a similar functionality. Okay, because the test scenario is same, register account functionality by providing all detail. Okay, so for that reason also we need some prerequisite like url. Similar sort of steps are there. Okay, but here we need to enter all the fields. Okay, here we just need to enter mandatory field. Okay, during execution I'll be explaining more. Okay, for this purpose, here also we need a test data. What kind of test data we need? We need first name, last name, email id, telephone, whatever the field mentioned in that particular register account form, that all fields we need here, right? So that can be our your test data. So for example, first name we need, right? These all details we need. We can have a test data for the respective fields. Okay, we can put up a test data likewise. Okay. Okay, so likewise we can have test data. Okay, then we can also have a expected result. Once we enter all the details, what should be the expected results? Like it should allow to take the account success page, as well as it should take to the particular account page once we double click upon the particular step. Okay, then once we done with the execution, we can put the actual result, we can have the priority, then we can put a remark as well over here. Okay, and we can have pass or fail for the particular test case. So this is from the test case documentation. Okay, we'll be executing this on the actual web. Okay, one moment. So now let's consider the first scenario. Okay, then we'll go to the uh, or else what can I do? I'll just share up the RTM documentation, then we'll move towards the execution phase. Okay, guys, when it comes to the RTM documentation, it is a simply mapping in between your requirement and uh, test case written, right? So for this document, you'll have a requirement ID, your test scenario ID, a particular test scenario description, and across that test scenario, across that requirement, how many number of test cases we have written, that we can update here. Likewise, this one is the RTM document. Suppose in case आपकी टीम में दो टेस्टर्स है,
ओके, और 3 4 जितने भी नंबर ऑफ टेस्टर्स है, हर एक का इंडिविजुअल लेवल पे डॉक्यूमेंटेशन रहेगा एंड एट द एंड ऑफ डे प्रोजेक्ट के लिए एक कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंटेशन बनेगा जिसमें सब रिक्वायरमेंट मेंशन होगी, सब टेस्ट सिनेरियो अक्रॉस टेस्ट डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ टेस्ट केसेस मेंशन रहेगी, राइट? दैट वन इज द कंसोलिडेटेड कंबाइंड डॉक्यूमेंट। ओके, बट ऑन अ इंडिविजुअल लेवल जो जिस भी मॉडल पे हम काम कर रहे हैं, राइट, जिस भी फीचर पे हम काम कर रहे हैं उसके सराउंडिंग डॉक्यूमेंटेशन रहेगा। Okay, so yeah, this one is the RTM which tells us the mapping in between your requirement, test scenario and test cases, right? So this one is the RTM document. So now, okay, hello, let's focus on the execution part. We'll perform it practically. Okay, chalo. Now we'll focus firstly on this first test case. Let me highlight this one. Okay. See guys, for the test case execution document also you need a test document only, test case document only. Okay, that one is the required, as well as your application should be ready. Okay, that build deployment phase should be already done, so that once the build is deployed, then we can go ahead and we can start the testing. Okay, let me go to the here. Okay, so till now here, like, we understand the requirement, based on that we derive the test cases. Okay, based sorry, test scenario, based on that we have derived test cases. For example, we have 100 number of requirement. From that, currently we have considered the first test scenario, and across this test scenario, for example, I have written the 2 requirement. So similar data I need to reflect into the RTM document, right? Okay, fine. So till here, like, we done with this kind of documentation. Okay, so next phase is, guys, build a deployment, right? That build deployment phase, or environment setup, we can say, simply say environment setup. Okay, also called as build deployment. Build deployment. Okay, build deploy in QA environment. Okay, QA testing phase or environment. Okay, so हमें जो भी पर्टिकुलर बिल्ड है जिसमें पे भी हमें टेस्टिंग करना है, राइट, वो पर्टिकुलर बिल्ड QA एनवायरनमेंट में डिप्लॉय होना चाहिए, राइट? वंस दैट बिल्ड इज डिप्लॉयड, देन विल बी मूविंग अहेड विथ टेस्ट केस एग्जीक्यूशन, राइट? टेस्ट केस एग्जीक्यूशन। ओके, जैसे हम टेस्ट केस एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं, राइट, सो फॉर दैट पर्पज हम रेफर करते हैं टेस्ट केस डॉक्यूमेंटेशन, राइट? विल बी रेफरिंग अब टेस्ट केस डॉक्यूमेंटेशन। सो यहाँ पे सीन क्या रहेगा, देखिए। आप जब भी टेस्ट के स्टार्ट कर रहे हो ना एग्जीक्यूशन, तो उससे पहले आपके सब जितने भी नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट है फॉर अ पर्टिकुलर साइकिल, उनके अक्रॉस आपके टेस्ट सिनेरियो कंप्लीट रहेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल ईच रिक्वायरमेंट के अक्रॉस हमने सिंगल टेस्ट सिनेरियो कैप्चर किया है, एंड अक्रॉस ईच रिक्वायरमेंट हमने 10 टेस्ट केस, 10 नंबर ऑफ टेस्ट केसेस राइट अप किए। सो इन दिस सिनेरियो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस विल बी 1000, राइट? सो जो भी आरटीएम डॉक्यूमेंट रहेगा, इसके करस्पॉन्डिंग आरटीएम डॉक्यूमेंट आपका बनेगा। ओके, सो जैसे ही जितने भी 100 रिक्वायरमेंट थे फॉर अ पर्टिकुलर साइकिल, उसके लिए हमने टेस्ट सिनेरियो डिराइव किए। ओके, डॉक्यूमेंटेशन फर्स्टली होगा, देन उसके अक्रॉस हमने टेस्ट केस डिराइव किया, एंड फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा हमने आरटीएम डॉक्यूमेंट अपडेट कर दिया, कंबाइंड डॉक्यूमेंट। ओके, जैसे ही आपका डॉक्यूमेंटेशन फेज खत्म होता है, नेक्स्ट फेज विल बी योर एनवायरनमेंट सेटअप, जहाँ पे आपका बिल्ड डिप्लॉय होगा इन टेस्टिंग एनवायरनमेंट, राइट, जहाँ पे हमें एक्चुअल टेस्टिंग करनी है। ओके, सो जैसे ही बिल्ड डिप्लॉय होता है, राइट, सो फॉर अ पर्टिकुलर बिल्ड विल बी हैविंग अ स्पेसिफिक यूआरएल फॉर द टेस्टिंग, राइट? उसके लिए जो भी उसके क्रीडेंशियल्स रहेंगे वो हमारे पास होंगे विद द टेस्टर टीम। जैसे ही हमें पर्टिकुलर बिल्ड डिप्लॉय होता है, राइट, सो विल बी स्टार्टिंग विद द टेस्ट केस एग्जीक्यूशन। ओके, सो फॉर स्टार्टिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर फेज आपका बिल्ड डिप्लॉय होना चाहिए, राइट, एंड आप टेस्ट केस स्टार्ट करते हो एग्जीक्यूट करना। तो यहाँ पे लाइक वी आर हैविंग ऑल 1000 टेस्ट केसेस। सो जैसे इन थेरोटिकल कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि देर आर मल्टीपल काइंड ऑफ टेस्टिंग्स। सो फर्स्ट वन, जैसे ही हम बिल्ड स्टेबिलिटी चेक करने के लिए स्मोक सैनिटी चेक करते हैं, इट इज नथिंग बट इन्हीं टेस्ट केस में से जो भी हाई प्रायोरिटी बेसिक फंक्शनलिटी टेस्ट केसेस है ना, वही हम टेस्ट केसेस एज अ स्मोक और सैनिटी एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देर आर 20 टेस्ट केसेस। ओके,
20 टेस्ट केसेस जो इंपॉर्टेंट है, जो फंक्शनैलिटी के सराउंडिंग है, इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी के सराउंड है। इन ऑर्डर टू चेक बिल्ड स्टेबिलिटी हम है ना, ओनली दैट सॉर्ट ऑफ टेस्ट केसेस विल बी एग्जीक्यूटिंग एज अ पार्ट ऑफ स्मोक सैनिटी टेस्टिंग, उसी को हम स्मोक सैनिटी बोलते हैं। ओके, जैसे ही हम चेक करते हैं ना जो भी बिल्ड डिप्लॉय हुआ है वो प्रॉपरली वर्क हो रहा है, बेसिक फंक्शनलिटी सही चीज अच्छे से चल रही है, राइट। लेटर ऑन हम नेक्स्ट फेज पे आते हैं, दैट इज द एक्चुअल, ओके, एक्चुअल फंक्शनल टेस्टिंग। और जिसे पर्टिकुलर अगर अगर टू द पॉइंट बोलना है तो दैट इज द सिस्टम टेस्टिंग। ओके, सिस्टम टेस्टिंग, एक्चुअल जो सिस्टम टेस्टिंग हमें करना है ना वो हम लेटर ऑन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो हम स्मोक और सैनिटी परफॉर्म करते हैं, राइट। अभी यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम सिस्टम टेस्टिंग में आते हैं तो यहाँ पे हमने टू टाइप्स देखे थे। वन इज योर विद इन सिस्टम टेस्टिंग, लाइक आपका जो फर्स्ट रहेगा दैट विल बी योर फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, राइट। नॉन फंक्शनल different different types set, right here different types are there under the your system testing, and जैसे system testing खत्म होता है then we'll be moving ahead with the UAT testing। ओके, यूएटी टेस्टिंग, और यहाँ पे क्लाइंट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, राइट। सिस्टम टेस्टिंग, ओके, फंक्शनल नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, ओके। सो जब भी आपका बिल्ड डिप्लॉय होता है, फर्स्टली विल बी मूविंग अहेड विद द स्मोक सैनिटी टेस्टिंग इन ऑर्डर टू चेक द बिल्ड स्टेबिलिटी, प्रॉपरली वर्क हो रही है, बेसिक फंक्शनैलिटी, राइट। एंड फॉर दिस पर्पस हमने ऑलरेडी टेस्ट केस राइट किए होते हैं, ओके, इन अ टेस्ट केस डिजाइन फेज। सो यहाँ पे जैसे ही ये पास होता है ना पर्टिकुलर, देन विल बी एक्चुअली मूविंग अहेड विद द डिटेल टेस्टिंग। हमारे पास जो भी 1000 नंबर ऑफ रिटन टेस्ट केसेस है उसके सराउंडिंग हम टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सो उसमें भी गाइस यहाँ पे देखो फंक्शनल नॉन फंक्शनल, ये जो भी टाइप के लाइक टेस्टिंग है ना वो ऑलरेडी आपके प्रोजेक्ट स्कोप में मेंशन होते हैं कि हमें फंक्शनली करना है, हमें नॉन फंक्शनल करना है, हमें परफॉर्मेंस भी करना है, लाइकवाइज हमें सिक्योरिटी भी करना है एज अ पार्ट ऑफ नॉन फंक्शनल। जो भी टाइप ऑफ टेस्टिंग है ना मतलब जो जो भी स्कोप में है हमें मेंशन होते हैं, बट मोर ओवर हमें फंक्शनल पे फोकस करना है इन द स्टार्ट फेज। ओके, सो उस चीज के लिए ऑलरेडी हमारे पास टेस्ट केस रिटर्न है, राइट। फॉर दैट पर्पज ऑलरेडी टेस्ट केसेस रिटर्न है, ओके। सो वही हम क्रॉस चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्ट केस डॉक्यूमेंट। सो नाउ लेट्स come to the test case document। I'll be sharing the test case document as well। Okay, ओके। सो इस फेज में हम एट एक्चुअल क्या करते हैं, अभी तक हमने टेस्ट सिनेरियो बनाए हैं, टेस्ट केसेस बनाए हैं, उसके अप्रूवल भी लिया है, राइट, फ्रॉम द टीम। देन बिल्ड भी डिप्लॉय हुआ है, बिल्ड की हमने स्टेबिलिटी भी चेक की है बेसिक टेस्ट केस एग्जीक्यूट करके। सो वही चेक करने के लिए ना हमें टेस्ट केस डॉक्यूमेंट चाहिए एट एक्चुअल। और चेक करना है मतलब क्या करना है, यहाँ पे देखिए कि लाइकवाइज फर्स्टली विल बी गोइंग फॉर वैलिडेटिंग द रजिस्टर अकाउंट बाय एंटरिंग ओनली मैंडेटरी फील्ड। ओके, वन मोमेंट गाइस। ओके, सो यहाँ पे देखिए प्री रिक्विजिट क्या है, तो पर्टिकुलर लिंक हमें चाहिए, जो भी बिल्ड डिप्लॉय हुआ है, राइट, उसका लिंक चाहिए। देन हमारे पास टेस्ट स्टेप्स भी है। सो लेट्स मूव हेड एंड एग्जीक्यूट वन बाय वन, स्टेप्स परफॉर्म करते हैं सो दैट इल ऑल हैव आइडिया। ओके, लेट मी शेयर। ओके, ओके फाइन। ओके, सो ये पर्टिकुलर लिंक है, डेमो लिंक है, राइट। यहाँ पे हमें विजिट करना है, हमारा जो भी एप्लीकेशन है। ओके, लेट मी गो टू द स्टेप फेज नाउ। अभी यहाँ पे ना हम स्टेप्स टेस्ट स्टेप्स में फोकस करते हैं। आई विल बी जूमिंग अ बिट। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या राइट अप किए हमने, देखिए गाइस, क्लिक ऑन माय अकाउंट ड्रॉप मेनू, लेट मी गो टू दैट। ओके, क्लिक ऑन माय अकाउंट, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, ड्रॉप पे हमने क्लिक किया है। लेटर ऑन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? ओके, देन क्लिक ऑन रजिस्टर, हमें रजिस्टर पे क्लिक करना है, राइट, दैट इज द सेकंड स्टेप। लेट्स गो अहेड एंड विल डू क्लिक ऑन रजिस्टर। ओके फाइन, हमने रजिस्टर पे क्लिक किया, दैट इज द सेकंड स्टेप। व्हाट इज द थर्ड स्टेप?
लाइक एंटर द अकाउंट डिटेल्स, हमें सिर्फ मैंडेटरी डिटेल्स एंटर करनी है, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल वगैरह जो भी मैंडेटरी है. लेट्स गो टू द एप्लीकेशन. ओके फाइन. ओके, यहाँ पे देखिए मैंडेटरी मीन्स यहाँ पे स्टार मार्क है ऑलरेडी, राइट. तो हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट मैंडेटरी फील्ड्स पुटअप करनी है. सो लेट्स पुट अप फॉर एग्जांपल टेस्ट. ओके, then we have last name. Okay, then the we have the email address, right. Then we can have dummy mobile number. Okay, then we can have a confirm password, sorry, password. Then we can have a confirm password, right. And likewise this one is the mandatory, like policy. Okay, we need to click over here. So these all are the mandatory field. As of now you can see this one is not mandatory, it's already selected to know. Okay, so for now most of the fields are mandatory, right. Some of the times basic some fields are not mandatory. For now we have like choose all the different fields over here. Okay, then let me click on continue. Okay, so here we'll see as a part of test, right, particular test uh, we need to enter a valid as well as invalid data for positive and negative sort of testing. Here you can see here it is clearly giving me an error, right. What it is showing, like please include @ in the email address, right. जो भी email address का format है it always includes @ symbol, right. इसीलिए वो warning दे रहा है. As a part of negative test ये सारी चीजें हमें check करनी है. And for like a particular test, for a number of tests we need a test data. For that हमें particular जो भी element है, for example first name, तो first name में आपके क्या क्या हो सकते हैं कि like आपका अल्फाबेट हो सकता है, right. मोस्टली नेम में अल्फाबेट्स ही होते हैं, राइट. सो पर्टिकुलर वही हमें चेक करना है कि रिक्वायरमेंट में अल्फाबेट ही है या उसमें नंबर्स भी होने चाहिए. लाइकवाइज उसके सराउंडिंग हम वैलिड एंड इनवैलिड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेटा क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट टेस्टिंग टेक्निक्स. उसमें कौन कौन से टेक्निक्स आते हैं आपके, इनपुट डोमेन टेस्टिंग, उसमें कौन से आते हैं आपके, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस आती है, राइट, इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग आती है. सो यहाँ पे जो भी आपका टेक्स्ट बॉक्स है ना उसके सराउंडिंग आपको डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डेटा क्रिएट करना है. ओके, यूजिंग दैट टेक्निक. एंड उसके हिसाब से आपके डिफरेंट टेस्ट केसेस क्रिएट हो गए अक्रॉस सिंगल सिनेरियो. लाइकवाइज हमें टेस्ट डेटा भी क्रिएट करना है बेस्ड ऑन यूजिंग दैट टेक्निक एंड डिफरेंट टेस्ट केसेस भी बनाने हैं. ओके, सो जैसे ही हम फॉर एग्जांपल लेट मी पुट दैट @ ओके एंड लेट मी पुट सम रैंडम डेटा. सो सी जैसे मैं डिटेल पुटअप करता हूँ तो वन मोर वैलिडेशन, लाइक प्लीज कंफर्म डू नॉट मैच, मींस जो भी मैंने पासवर्ड पुटअप किया था, कंफर्म पासवर्ड पुटअप किया था वो मैच नहीं हो रहा, राइट. फॉर दिस पर्पस लाइक यहाँ पे जो भी टेस्ट केस डॉक्यूमेंटेशन है, राइट, फॉर दिस पर्पस प्री रिक्विजिट आपका जो टेस्ट डेटा है ना यहाँ पे आपके वो डिटेल्स अवेलेबल होने चाहिए कि लाइक फर्स्ट नेम में आप क्या एंटर करना चाहते हो, लास्ट नेम में क्या एंटर करना चाहते हो, ईमेल में क्या. लाइकवाइज इसी को आप हम क्या बोलते हैं टेस्ट डेटा. एंड फॉर डिराइविंग द टेस्ट डेटा विल बी गोइंग अहेड एंड यूजिंग दैट डिफरेंट टेक्निक्स. ओके, एरर गेसिंग, स्टेट ट्रांजिशन, डिसीजन टेबल, वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके हम टेस्ट डेटा क्रिएट करते हैं यहाँ पे. Okay, and same data test data we are using for the testing purpose. For example, first name I am keeping test. Okay, then the last name I am keeping test last. Okay, likewise, then email I am keeping test for example gmail.com. Okay, likewise, then password I'll be keeping for example 12345 and a confirm password 12345. Okay, likewise these are the some mandatory fields we can have in the field of test data. Okay, we can put here in the field of test data. So for this we can also have positive data, negative data, likewise. Okay, so once we enter the data and like we let me enter the confirm and correct password over here. Okay, and let me click on continue. ओके, देखिए जैसे मैंने मैंडेटरी फील्ड्स प्रॉपरली फिलअप किए. ओके, देन क्लिक ऑन कंटिन्यू किया तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट, लेट्स चेक फॉर द एक्सपेक्टेड रिजल्ट. हमें एक्सपेक्टेड क्या था, यूजर शुड बी लॉग इन एंड टेकन टू द अकाउंट सक्सेस पेज, राइट, एंड प्रॉपर डिटेल्स शुड बी डिस्प्लेड ऑन द पेज.
वहां पे हमें कहाँ पे रिडायरेक्ट होना था पेज पे, अकाउंट सक्सेस। सी this one is the account has been created, this is the account success page, right? Congratulations, your account has been successfully created. So हमारा जो भी first expectation था वो similar है, right? Hence in actual result जैसे हम test case execute करते हैं ना, will be putting user got login to particular account success page, right? एंड जो भी डिटेल्स है वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहा है। एंड सेकंड एक्सपेक्टेशन क्या है? ओके, क्लिक ऑन अगेन, हमें क्लिक ऑन कंटिन्यू करना है। यहाँ पे देखिए फिफ्थ स्टेप, हमने फोर्थ स्टेप एग्जीक्यूट की, फिफ्थ स्टेप पे हमें क्या करना है? क्लिक ऑन कंटिन्यू। वापस से जाते हैं एप्लीकेशन पे, क्लिक ऑन कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमें कहाँ पे हम डायरेक्ट हो रहे हैं, रिडायरेक्ट हो रहे हैं अकाउंट पेज पे। कहाँ पे विजिट कर रहे हैं? तो अकाउंट पेज पे। सो व्हाट इज अवर सेकंड एक्सपेक्टेशन? लेट्स सी एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ओके, यूजर शुड एबल टू टेकन टू अकाउंट पेज। यूजर कहाँ पे विजिट होना चाहिए? अकाउंट पेज पे। यस, करेक्ट। एंड कंफर्मेशन ईमेल शुड बी सेंड टू द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। हमने जो भी ईमेल आईडी प्रोवाइड किया है वहां पे ईमेल सेंड होना चाहिए अकाउंट डिटेल्स के साथ, राइट? तो यूजर शुड एबल टू टेक टू दी कंफर्मेशन पेज। और हम अभी जैसे मैंने डमी ईमेल दिया था, राइट? हम टेम्पररी ईमेल भी क्रिएट कर सकते हैं फॉर अ टेस्टिंग पर्पस फ्रॉम द गूगल। एंड सिमिलर ईमेल पे हम वैलिडेट भी कर सकते हैं कोई रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं। तो इन दिट सिनेरियो हम अज्यूम करते हैं कि जैसे हमने अकाउंट सक्सेस पेज पे भी हम लैंड होते हैं और हमें ईमेल भी मिला है। सो इन दैट सिनेरियो जो हमने एक्सपेक्ट किया था, जो हमें चाहिए था, वही रिजल्ट हमें एट एक्चुअल मिल रहा है, राइट? आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट केस। Hence particular test case we can keep the result as pass, right? We can keep the result as pass। अगर हमें कोई लाइक ऑब्जर्वेशन मिलता है सराउंडिंग टू दिस, वो जो भी है हम एज अ पार्ट ऑफ कमेंट ऐड कर सकते हैं। इन केस हमने जो भी एक्सपेक्ट किया था एट एक्चुअल में वर्क नहीं हो रहा है, तो इन दैट सिचुएशन अवर टेस्ट केस गेट फेल्ड एंड फॉर पर्टिकुलर फेल्ड टेस्ट केस विल बी रेजिंग अ बग। सो दिस वन इज द योर टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज, ठीक है? सो सिमिलरली यहाँ पे सेकंड पे भी फोकस करते हैं सो दैट you'll also have more clarity। सेकंड टेस्ट केस इज आल्सो काइंड ऑफ सिमिलर। यहाँ पे हमने मैंडेटरी फील्ड पुट अप किए और यहाँ पे हमें ऑल फील्ड सिलेक्ट करने हैं, राइट? सो ये दोनों भी टेस्ट केस अभी एज ऑफ नाउ तो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर दिखेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन जो है ना, लेट मी लॉग आउट। ओके गाइस, प्लीज कीप ऑन म्यूट। Okay, so yes, let me log it out. Okay, let me visit again, like click on account page, then second step click on register। यहाँ पे अगर देखते हो ना तो ऑलमोस्ट सारी चीजें कंपलसरी, बट कई कई एप्लीकेशन में क्या होता है ना, कुछ चीजें कंपलसरी नहीं होती। फॉर एग्जांपल हम ट्राई करते हैं विद द डेटा। ओके, लेट मी पुट सम डेटा। ओके फाइन। ओके, लेट मी पुट सम डेटा। ओके चलो, एज ऑफ नाउ है ना, जितने भी हमने डिटेल्स फिलअप किए हैं वो सब मैंडेटरी है, राइट? इन पे कोई स्टार नहीं है। लेट्स गो हेड एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो यहाँ पे देखिए क्या एरर वार्निंग आ रही है हमें कि लाइक यू मस्ट एग्री टू द प्राइवेसी पॉलिसी। सो सराउंडिंग टू दैट, ओके सर सराउंड, स्क्रीन ओपन नहीं हो रही मेरे इसमें, सॉरी, स्क्रीन नहीं ओपन हो रही है सर। ओके लेट मी रीशेयर अगेन। ओके नाउ प्लीज चेक। नहीं सर, वो विजिबल है ना? Yes, sir. मेरे इसमें तो है नहीं सर। Yes, sir. ओके गाइस प्लीज। ओके ओके, सो यहाँ पे हमें बेसिकली वार्निंग मैसेज मिला है, राइट? सो लेट मी गो टू द स्टेप्स। ओके, यहाँ पे देखते हैं हम एक्सपेक्टेड क्या था। ओके, यूजर शुड एबल टू, यहाँ पे देखिए हमें प्राइवेसी पॉलिसी भी एग्री करनी है, राइट? सो दैट पार्ट इज मिसिंग फ्रॉम आवर स्टेप्स। लेट मी गो टू द हियर। ओके, हमें ये भी एग्री करने हैं, राइट? एज अ पार्ट हमें सब्सक्राइब पे कुछ मैंडेटरी नहीं है, तो हमने ऑलरेडी जो डिफॉल्ट है एज इट इज कीप अप किया है। लेट मी क्लिक ऑन कंटिन्यू। यहाँ पे भी देखिए जैसे हमने जो मैंडेटरी लाइक ऑल फील्ड्स जितने भी थे, राइट, सब फिलअप कर दिए और लेटर ऑन क्लिक ऑन कंटिन्यू किया, राइट? सो यहाँ पे भी हमें अकाउंट क्रिएट अप हुआ, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या है कि सिमिलर सॉर्ट ऑफ है फॉर नाउ। ओके,
कि like user should able to log in, also a confirmation able email should be sent to the particular register email id. Okay, so दोनों भी जो आउटपुट है एक्चुअल और एक्सपेक्टेड दोनों सिमिलर है, hence this test case is also pass. बट इन केस कुछ ऐसा होता है कि आप अकाउंट सक्सेस पेज पे तो जा रहे हो बट यू आर नॉट गेटिंग ईमेल, जो भी आपने ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया है उस पर ईमेल नहीं आता है, तो इन दैट सिनेरियो, अगर इन दैट सिनेरियो like your test case is failed, right? In that scenario your test case is failed, so you should put the status as failed. Okay, let me, okay, fine, let me change the color. Okay, so in that scenario your particular test case will be failed, and for failing test case we are going to raise the bug. Likewise, we are writing up the test cases, we are executing the test cases, and once we're done with the execution, let me show you how we are going to report the particular defect. Okay, so yeah, see till now like we have written a test scenario, single test scenario. Surrounding to that we have written two test cases, and into the RTM document we have mapped a consolidated test cases. Into the test case execution report, like we have executed a particular test case, and surrounding to that we have written it, like we have updated its uh, status, like whether the test case is pass or fail, right? Likewise, okay, once the particular, if the particular test case is fail, so in that scenario we can go ahead and we can create a bug document. Okay, फॉर एग्जाम्पल एक दिन में हमने 20 नंबर ऑफ टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट किए, और उसमें से आउट ऑफ दैट थ्री टू फोर नंबर ऑफ फॉर एग्जांपल टेस्ट केसेस आपके फेल हुए हैं, राइट? आपने वापस से वहीं पे रीएग्जीक्यूट करके देखा, फिर भी फेल हो रहे हैं। सो इन दैट सिनेरियो व्हाट वी आर डूइंग, लाइक वी विल बी डूइंग, हम पर्टिकुलर टेस्ट केस एग्जीक्यूट होने के बाद बग टेम्पलेट फॉलो करेंगे, राइट? और यहाँ पे हम उस पर्टिकुलर फेलियर टेस्ट केस के सराउंडिंग बग रेज करते हैं, ठीक है? फॉर दैट सिनेरियो बग आईडी रहेगा, आपका डिस्क्रिप्शन रहेगा। सो लाइक all the most of details will be from your test case only. Okay, so let me put पर्टिकुलर डिटेल्स हो रही है। ओके, सो आपका टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन, ओके, जो भी आपका पर्टिकुलर टेस्ट केस है वही आपके ऑलमोस्ट डिटेल्स रहेगी। लेट मी कैप्चर द डिटेल्स। ओके फाइन, सो यस, आपका जो पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन रहेगा फ्रॉम द टेस्ट केस, we can go ahead and we can put a similar sort of description here, right? Okay, for example आपका ये टेस्ट केस फेल हुआ है, so in that scenario we'll be putting up the टेस्ट डिस्क्रिप्शन। जो भी स्टेप्स हमने एग्जीक्यूट किए थे वही सिमिलर स्टेप्स हमें टू द डेवलपर देना है, जिससे क्या होगा ना, जो भी आपका पर्टिकुलर टीम डेवलपमेंट टीम है, राइट, उनको भी विजिबिलिटी रहेगी कि थ्रू विच स्टेप्स हमें ये पर्टिकुलर बग मिला है, राइट? सो पर्टिकुलर स्टेप्स रहेंगे, आपका जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, राइट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो सिमिलर रिजल्ट यहाँ पे रहेगा। आपका जो भी एक्चुअल रिजल्ट है फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे रहेगा। नाउ सी, यहाँ पे आप प्रायोरिटी भी, जो टेस्ट केस है अगर वो इम्पोर्टेंट फंक्शनैलिटी है तो उसकी प्रायोरिटी आपकी हाई रहेगी, राइट? ओके, एंड अगर पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी मेन फंक्शनैलिटी है जिससे है ना फंक्शनैलिटी ब्रेक हो रही है, मतलब आप रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो, लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, पर्टिकुलर मेन फंक्शनैलिटी ब्लॉक हो रही है, तो इन दैट सिनेरियो वी कैन पुट अ सिवियरिटी एज वेल। और जैसे सिवियरिटी में हमने देखा था कि लाइक देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ सिवियरिटी। सो पर्टिकुलरली लाइक वो ब्लॉकर है, मेजर है, माइनर है, राइट? लाइकवाइज वी कैन पुट फॉर एग्जांपल ब्लॉकर, हम पर्टिकुलर यूजर को है ना रजिस्टर ही नहीं कर पा रहे, तो उससे क्या होगा ना कि पर्टिकुलर टेस्ट के सॉरी पर्टिकुलर जो बग हमने रेज किया है फेल टेस्ट के सराउंडिंग, उसके वजह से हम आगे का टेस्टिंग पूरा ब्लॉक हो रहा है। सो इन दैट सिनेरियो वी कैन पुट अ severity as complete blocker, right? And we can have a priority as p1. P1 means you're high. Okay, for better understanding I'll be putting high. Priority is high because it needs to be fixed on priority, because other test cases we are not able to execute, as well as the functionality is completely breaking. For example, the particular functionality is breaking, but that is not into the main functionality, then we can have other status as well, like your major, minor. Depending upon that we can decide up the severity and priority.
okay, for particular test case. And for a particular field test case, like where it is failing, we can capture the screenshot. Okay, we can capture the screenshot using this snipping tool. It's a default tool for windows. Okay, हम विंडोज में स्निपिंग टूल जस्ट सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे न्यू क्लिक करने पे लेट मी, ओके, लाइकवाइज हमें ना सिंपल डायरेक्टली पर्टिकुलर फील्ड वेबसाइट पे जाके पर्टिकुलर फील्ड जहाँ पे भी हो रहा है ना उसका इफ रिक्वायर्ड स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं एंड विद इन द सेम डॉक्यूमेंट हम पेस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी ये फोटो कैप्चर करके यहाँ पे जस्ट नाउ ये कर रहा हूँ, राइट। सो जितना ज्यादा डिटेल हो सकता है ना हमें ड्यूरिंग बग रिपोर्ट हमें रेज करना है, सो दैट उससे क्या होगा ना, आपकी जो भी डेवलपमेंट टीम है, डेवलपर टीम है, उनको क्लैरिटी रहेगी कि ये बग कौन से फंक्शनलिटी के अक्रॉस है, राइट, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, इसको रिप्रोड्यूस करने के लिए स्टेप्स क्या है, एक्सपेक्टेड क्या था, एक्चुअल क्या मिल रहा है, और इसकी सिवेरिटी एंड प्रायोरिटी क्या है, राइट। उससे उनको पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसको फिक्स करना कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। और जैसे ही फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर बग हमने रेज किया फॉर एग्जांपल टुडे एंड इट इज अ ब्लॉकर एंड डेवलपर स्टार्ट वर्किंग, और पर्टिकुलर डेवलपर ने अगर वही सेम बग अभी यहाँ पे आते हैं थोड़ा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, ओके। अभी तक देखिए हमने टेस्ट एग्जीक्यूट किया, राइट, उसके सराउंडिंग हमने स्मोक सैनिटी बिल्ड स्टेबिलिटी के लिए किया, देन फंक्शनल टेस्टिंग पार्ट पे हमने फंक्शनल चेक कर रहे हैं, राइट। सो ड्यूरिंग टेस्ट केस एग्जीक्यूशन हमें बग मिला, राइट। जो बग था फॉर एग्जांपल उसका आईडी हमने पुटअप किया है बग 001। तो जैसे ही हम बग रिपोर्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे आपका पिक्चर में आता है बग लाइफ साइकिल, बग लाइफ साइकिल, ओके। सो फर्स्टली हमने क्या किया, एग्जीक्यूट करने के बाद पर्टिकुलर बग हमने डॉक्यूमेंट में अपडेट किया और टीम के साथ शेयर करते हैं, राइट। सो बेस्ड ऑन दिस बग इसका एनालिसिस होगा और ये डिफरेंट फेजेस से चलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे वो पर्टिकुलर बग ऑलरेडी किसी ने रेज किया है क्या, वो उसकी प्रायोरिटी क्या है, सिवियरिटी क्या है, उसको हम बाद में फिक्स कर सकते हैं क्या, क्या अभी फिक्स करना जरूरी है। लाइकवाइज बग विल बी rejected due to number of reasons, bug will be deferred, right, bug will be marked as duplicate if it's already exist, right। so likewise उसके है ना डिफरेंट डिफरेंट बग लाइफ साइकिल फेजेस यहाँ पे पिक्चर में आते हैं। फॉर एग्जांपल वो ना तो डुप्लीकेट है, ना तो डिफर्ड है, ना तो रिजेक्ट हुआ है, राइट। सो इन दैट सिचुएशन bug will be assigned to a dev, राइट, बग विल बी असाइन टू अ डेवलपर, और डेवलपर पर्टिकुलर बग पे वर्कआउट करेगा और जैसे ही वर्कआउट करेगा वो उसका स्टेटस क्या रहेगा, रे फिक्स रहेगा, राइट। पर्टिकुलर बग ओपन होगा, पर्टिकुलर बग डेवलपर का असाइन होगा एंड देन पर्टिकुलर डेवलपर उस पर काम करके बग को फिक्स कर देगा। जैसे ही बग फिक्स होता है, फॉर आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक बग, ओके, जैसे ही बग फिक्स होता है एज अ पार्ट ऑफ टेस्टर टीम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पर्टिकुलर बग जो फिक्स हुआ है ना उसी के लिए मॉडिफाइड बिल्ड चाहिए हमें, राइट। सो पर्टिकुलर मॉडिफाइड बिल्ड आपका यहाँ पे टेस्टिंग एनवायरनमेंट में डिप्लॉय होगा। अगेन आप जो भी बेसिक फंक्शनलिटी चेक है वो चेक कर रहे होगे, राइट, एंड सराउंडिंग टू दैट जो भी आपके एज अ पार्ट ऑफ लाइक आपका बग फिक्स हुआ है उसके सराउंडिंग आप जो भी टेस्टिंग करते हो ना उसी को हम बोलते हैं रीटेस्टिंग, टेस्टिंग ऑफ द बग फिक्सेस, राइट, रीटेस्टिंग, ओके। एंड ड्यू टू दिस बग अगर इन केस अदर मॉडल पे कुछ इम्पैक्ट होता है तो फॉर दैट रीजन विल बी गोइंग अहेड एंड विल बी परफॉर्मिंग रिग्रेशन, राइट। सो यही पे आपके है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्मिनोलॉजीज का स्कोप आता है, राइट, ओके। सो फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग रीटेस्टिंग हमें मिला कि लाइक बग इज ओके फिक्स है, मतलब डेवलपर ने पर्टिकुलर बग फिक्स किया था, अभी एज अ फंक्शनलिटी प्रॉपरली चल रही है, देयर इज नो ब्रेकेज इन फंक्शनलिटी, ओके। हमने उसके सराउंडिंग थोड़ा इम्पैक्ट हो रहा था तो वो भी क्रॉस चेक किया। अभी बग इन केस यहाँ पे हमें फाउंड होता है कि बग इज फिक्स, सो दैट विल बी गोइंग अहेड एंड विल बी क्लोजिंग द पर्टिकुलर बग। लाइकवाइज जितने भी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन फेज हम बग रेज करते हैं ना सभी बग हम ट्रैक करते हैं, उसी को हम कहते हैं बेसिकली बग लाइफ साइकिल और बग ट्रैकिंग, ठीक है, ओके, ठीक है, फाइन। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 1000 टेस्ट केसेस राइट अप किए थे, सराउंडिंग टू दैट हमने बेसिक टेस्ट केसेस हर बार एग्जीक्यूट करते हैं नए बिल्ड पे, ओके, एंड जो एक्चुअल डिटेल टेस्ट केसेस है वो आगे एग्जीक्यूट करते रहते हैं। एट द एंड ऑफ लाइक साइकिल कि हमने जितने भी टेस्ट केसेस राइट अप किए थे सारे टेस्ट केस हमने एग्जीक्यूट किए सराउंडिंग टू फंक्शनल नॉन फंक्शनल जीयूआई जो भी टाइप ऑफ टेस्टिंग स्कोप में है, ओके।
जैसे हमारे फॉर एग्जांपल हमने 1000 टेस्ट केसेस राइट अप किए थे, सभी टेस्ट केसेस डन हुए हैं, ओके, एंड जो भी बग हमने रिपोर्ट किए थे वो बग भी फिक्स हो गए हैं, ओके। सो इन दैट सिनेरियो नेक्स्ट फेज आपका आता है, दैट इज द टेस्ट क्लोजर, करेक्ट, सॉरी सॉरी। इसमें जैसे ही आपका एग्जीक्यूशन वगैरह होता है ना, तो सारे टेस्ट केसेस होते हैं, राइट। सो इसका कंप्लीट आप करते हो टेस्ट समरी रिपोर्ट, टेस्ट समरी रिपोर्ट एंड बग रिपोर्ट। जो भी बग आपने रिपोर्ट किए थे उनका स्टेटस जो भी है सराउंडिंग टू दैट, हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर रिपोर्ट टीम के साथ शेयर करते हैं, ओके। एंड लाइक जैसी टीम का उसके ऊपर रिव्यू होता है, कंफर्मेशन होता है क्लाइंट के साइड से भी, राइट। एंड जैसे ही सब प्रोसेस डन होता है, देन विल बी स्टॉपिंग विद द टेस्टिंग इन अ सिस्टम टेस्टिंग फेज। उसी को हम पर्टिकुलरली बोलते हैं टेस्ट साइन ऑफ, राइट, जो हमारे एंड से ड्यूरिंग सिस्टम टेस्टिंग होता है, ओके। once we done with the once we done with the test sign off, ओके, जहाँ पे ये कंसोलिडेटेड रिपोर्ट रहेगा कि इतने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट किए, इतने नंबर ऑफ फेल हुए, इतने नंबर ऑफ बग रिपोर्ट हुए, उनके स्पेसिफिक टेम्पलेट रहेगा जो हमने देखा, राइट, ओके। जैसे ये पर्टिकुलर ओके बग रिपोर्ट जस्ट नाउ हमने देखा, राइट, ओके। लाइकवाइज विल बी टेकिंग स्क्रीनशॉट एंड हम रिपोर्ट करते हैं, एंड जितने भी नंबर ऑफ बग्स पर्टिकुलर एप्लीकेशन में फाउंड होते हैं ना, हम यहाँ पे रिपोर्ट करते चलते हैं, ठीक है। ये तो गए गाइस फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन साइड, ओके। सो इसमें आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट हो गए देखिए, एज ऑफ नाउ लाइक टेस्ट सिनेरियो, टेस्ट केस, आरटीएम, टेस्ट एग्जीक्यूशन रिपोर्ट, ओके, इसका कंसोलिडेटेड रिपोर्ट एंड बग रिपोर्ट, राइट। सो ये सारा डॉक्यूमेंटेशन जैसे ही रिव्यू होता है, राइट, कंप्लीट अप होता है, देन विल बी मूविंग अहेड एंड ओके, विल बी मूविंग अहेड, ओके, एंड विल बी गिविंग अ टेस्ट साइन ऑफ, ओके, टेस्ट साइन ऑफ होता है। तो उससे आपका कौन सा फेज कंप्लीट हो गया, सिस्टम टेस्टिंग। नेक्स्ट टेस्टिंग इज ड्यूरिंग टेस्टिंग फेज आपका आता है यूएटी। यहाँ पे है ना, क्लाइंट एंड से एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, आपका प्रोडक्ट ओनर रहेगा या आपका बीए रहेगा, वो लोग भी फ्रॉम द बिजनेस साइड चेक करते हैं, ओके, बिजनेस सिनेरियो चेक करते हैं बेसिकली वो, ओके। बिजनेस सिनेरियोस मतलब एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है ना उसके सराउंडिंग चेक करते हैं एप्लीकेशन। एंड यहाँ पे दो टाइप्स आते हैं आपके, वन इज अल्फा, जो हमने पढ़ा था इन अ थेरेटिकल कंसेप्ट, अल्फा, एंड सेकंड वन इज योर बीटा, राइट। ये दोनों टेस्टिंग का स्कोप आता है, ओके। सराउंडिंग टू दैट जो भी बिजनेस पर्सन्स, जो भी एंड क्लाइंट एंड पर्सन्स रहते हैं ना, वो इन्वॉल्व रहते हैं फॉर यूएटी टेस्टिंग। यूएटी स्टैंड्स फॉर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यहाँ पे भी फंक्शनलिटी पार्ट पे चेकिंग किया जाता है, ओके। सो यहाँ पे हमने जितने भी डिफेक्ट फाइंड किए थे, राइट, डिफेक्ट बग फाइंड किए थे, रिपोर्ट किए थे, हम इतना कितना भी टेस्टिंग करें ना, कुछ ना कुछ बग जो मिस होता है ना, वो हमें यहाँ पे मिलते हैं विद इन यूएटी, राइट। वो फिर से वो रिपोर्ट करते हैं टू द टीम, राइट, ओके। एंड उसी पे वापस से डेवलपमेंट टीम काम करती है, देन एज अ पार्ट ऑफ टेस्टर, टेस्टिंग टीम हमें वापस से उसको रिटेस्ट रिग्रेशन करना पड़ता है। तो ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है गाइस, ओके, ओके। तो यहाँ पे भी सारा कुछ फिक्स हो गया एज ऑफ नाउ, हम मानते हैं यहाँ पे भी सारा कुछ क्लाइंट ने हमें गो अहेड दिया। तो यहाँ पे अगर हम गो अहेड देते हैं ना, सो विल बी लाइक फ्रॉम टेस्टिंग फेज यहाँ पे है ना, लाइक ऑलमोस्ट डन होता है, एंड देन विल बी मूविंग अहेड एंड हम डिप्लॉय कर देते हैं पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑन द प्रोडक्शन साइड। और अगर प्रोडक्शन पे पर्टिकुलर फीचर जाता है, तो आपका जो भी एंड यूजर है, क्लाइंट का जो भी एंड यूजर है ना, वो यूज कर सकता है पर्टिकुलर फीचर को। टिल हियर लाइक हम इंटरनली ही सारा कुछ टेस्ट करते हैं। एंड जैसे ही एसडीएलसी का हमने फेज देखा, आफ्टर टेस्टिंग क्या होता है कि लाइक देयर इज अ डिप्लॉयमेंट, राइट। एंड डिप्लॉयमेंट फेज में अगर पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिप्लॉय हो जाता है, इट मींस इट इज ओपन फॉर ऑल, ठीक है। एंड जैसे ही वो पर्टिकुलर फीचर डिप्लॉय भी होता है, तो उसका मेंटेनेंस भी चलता रहता है एज पर द प्रोजेक्ट पार्ट। So yeah, this is all on the documentation side.